Hello everyone. Today in Asianet Newsable podcast, I have with me Bebika Dhurbe, the third runner-up of Big Boss OTT Season 2, and she is set to embark on a new adventure in the upcoming reality show, Reality Ranis of the Jungle. Known for her bold personality and amazing presence on screen, Bebika has won the hearts of millions with her unapologetic attitude. So, Bebika, this new show is coming where you'll be seen in a jungle doing daunting and challenging tasks. So, tell us what can we expect from the show? Well, it's my first adventure show. I really wanted to have an exposure of an adventure show because मैंने जिंदगी में कभी ये किया नहीं है. And I pretty much look up कि I am a very distinctive personality. I stand out in the crowd for being myself, for being very authentic and real and embracing my reality rather than मैं अपने आप को society के beauty standards में push नहीं करती, बल्कि मैं अपने खुद की ओरिजिनलिटी से सोसाइटी के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को चेंज करती हूँ. तो मुझे प्रिटी मच कॉन्फिडेंस था कि लोग मुझ जैसी को ज्यादा देखना चाहेंगे ऐसे शो पे कि अब ये क्या करेगी. तो इसीलिए मैंने हाँ कहा, बट इट वॉज वेरी चैलेंजिंग, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट. इट इज थोड़ा मुझे अनफेयर भी लगा क्योंकि अदर कंटेस्टेंट्स हु वर विथ मी, दे वर मिलिट्री ट्रेन्ड पुलिस वुमेन एंड प्रोफेशनल ट्रैक लीडर्स एंड आई एम जस्ट अ कॉमन पर्सन इन फ्रंट ऑफ देम बिकॉज हम जिम ही हफ्ते के 3 दिन मुश्किल से जा पाते हैं एज एन आर्टिस्ट. तो बहुत चैलेंजिंग था, हद से ज्यादा चैलेंजिंग, बट इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. So, Bebika, tell us like how it is different from Big Boss, because in Big Boss you also know that you are surrounded with CCTV cameras around the clock, and this one is also capturing very close glimpses of you. You are fighting because I've seen the promo of the show. There is a lot of scuffle going on in between the contestants. So, how much is it different from Big Boss OTT? Well, the thing that is different is कैमराज आर नॉट 24/7 ऑन. सो जो कैमराज के पीछे कुछ कंटेस्टेंट्स एक दूसरे के साथ हरकत करते हैं वो आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे. सो अ लॉट वुड बी स्पोकन बिहाइंड द कैमरा बाय पीपल एंड नॉट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. तो मैंने देखा इस शो में लोगों की पर्सनालिटी जैसे ही कैमरा ऑन होता है बहुत अलग कर देती हैं वो लड़कियां, और जैसे ही कैमरा ऑफ होता है तो वो अपनी असलियत दिखाने लग जाती है. तो वो तो और ट्रॉमेटिक हो रहा था क्योंकि आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे कि किसने आपके साथ क्या किया, क्योंकि कैप्चर्ड ही नहीं हुआ, और आपको इंसाफ भी नहीं मिल पाएगा क्योंकि बिग बॉस में तो हर वीकेंड के वार पे सलमान सर आके अपने आप से आपको इंसाफ देते थे. यू डिडंट हैव टू आस्क हिम सर मुझे जस्टिस दीजिए. आई मीन सलमान सर हैज अ वेरी ह्यूमैनिटेरियन, एम्पैथाइजिंग एंड जनरस हार्ट. तो हर शो में आपको वैसे भी इंसाफ मिले ये जरूरी नहीं है. Yeah, so we'll be seeing 12 women, khatarnak yet khoobsurat women in the show, and you are all, left in the jungle. So tell us, because we know when there is a dearth of resources, that is when you learn some of the most hard-learned life lessons. So in this show, when you're doing, this entire show in the jungle, and when you don't have much resources, how do you look at it? Have you learned something from all of these experiences that you've gathered in the show? Yeah, I really never expected that I could have the potential to do certain things that I've done in the show. मुझे नहीं पता था मैं इतना भी कर सकती हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को, अब लोग कहते हैं कि तुम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करती हो, बट मैं थोड़ा रियलिस्टिकली चलती हूँ. आई मीन अगर आप कंपेयर करेंगे साइंटिफिकली तो एक हैवी और लग्जरी गाड़ी माइलेज कितना देगी, 14 से 15 किलोमीटर पर लीटर. वही एक सस्ती और छोटी हल्की गाड़ी माइलेज 19 से 25 देती है. तो छोटी और हल्की गाड़ियां ऑफ कोर्स माइलेज ज्यादा देगी ना, मैं कैसे दूंगी. तो दिस इज समथिंग विच इज वेरी साइंटिफिक. तो व्हेन इट कम्स टू trekking or running in the woods, of course I will be the one who's behind and last because I'm heavier than most girls. तो इस वजह से इट्स अ वेरी साइंटिफिक थिंग. बट उसके बियॉन्ड भी अगर कोई चीज देखी गई तो देयर आर सर्टेन थिंग्स आई हैव डन वेरी वेल व्हिच वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड फ्रॉम मी. सो लोगों को वो साइड मेरा देखने मिलेगा और मजा आने वाला है. All right, so Bebika, now you are as you're giving us the sneak peeks of the show, I also want to ask, like, you're talking about which side of Bebika are we going to see in the show. So tell us, because in the Big Boss OTT season we have seen you wearing gaudy fashion choices, and sometimes people also trolled you and body shamed you.
This time, are you going to be in your authentic self completely, or will we see a different side of Bebika in the jungle in terms of your fashion choices? Fashion, though, I had no choice because we had to be in the most comfortable outfits, but they put, I mean, I can't reveal much. No, fashion में नहीं देख पाओगे आप, सिर्फ टास्क और फिजिकल स्ट्रेंथ और फिजिकल एबिलिटीज से रिलेटेड चीजें ही देख पाओगे, क्योंकि दिस इज नॉट अ फैशन type of a show. It's more of a challenge oriented show, but you will see my soul very authentic, even though I'm not getting to wear good clothes of my choice, but you will definitely see my soul is just the same. In fact, here it's way more than you can imagine. Right. So we are actually very thrilled and very much anticipating what we're going to see on the show. So let us move on to the next question. I want to talk about the current Big Boss seasons which are going on. Tell us, is Bebika following Big Boss Marathi and Telugu? Tell us this first. Well, I'm a Maharashtrian, so I don't usually follow Big Boss Marathi, but there are a lot of reels on the internet which are coming, and they are you could see a little glimpses of it. So I was not really liking Nikki Kamboli being ill-treating towards Varshas Gaokar ma'am, because I've seen her ever since I was a little kid, and she's been this gorgeous, super talented lady who has been ruling not just Marathi cinema but also a part of our Bollywood cinema. I mean, Akshay sir से लेकर ऋषि कपूर सर से लेकर सबके साथ काम किया है उन्होंने. तो we idolize her like anything, but the way Nikki, who has hardly done anything in life, इतना overconfidence, इतना बदतमीजी, इतना ridiculous behavior. Like मैं कहीं भी जाऊँ, I am never mean to the seniors. I am never disrespectful to the seniors. I never look down to somebody who's achieved way more than us. This is not the right attitude. So I was really against her behavior. So as per Bebika, she does not want to see Nikki Tamboli in top 4 contestants. Can I say this? No, not at all. It's wrong. And I believe Arya shouldn't have, I think Arya slapped her and she got out of the show. Yeah. She shouldn't have been violent, because मेरे season में तो यार मुझे इतने reason मिल गए थे violent होने के, but मैं नहीं हुई ना. But then मुझे what तो about, मतलब Arya also shared few reels and videos wherein she is showing how Nikki Tamboli is actually pushing her. What is your stance on those videos? मेरे सीजन में भी मैं कर पाती, क्योंकि मुझे भी एक कंटेस्टेंट ने इतना बदनाम कर दिया कि बेबिका ने धक्का मारा और रोने लग गई, लेकिन उस लड़की ने मुझे जो धक्का मारा था वो कभी बाहर आया ही नहीं, क्योंकि मेरी इतनी घिसी पिटी पीआर टीम थी ना, उसने कभी वो रिवील ही, मतलब माय पीआर टीम वाज एन, I mean, what should I say? I fired them the moment I came out of the house. So they never got the other contestants' abuse out. So I'm very proud of Arya that she's speaking up for herself and she's revealing with evidence. वो मेरे टाइम पे मैंने नहीं किया, तो I wish I should have done that immediately. But मुझे सब बोलते थे अभी बिग बॉस हो गया, कुछ मत बोलना. अरे लेकिन बेफजूल का आपको टारगेट भी तो किया जाता है ना, बिग बॉस के बाद भी लोग बिग बॉस खेलते हैं. Yeah. So, Bebika, we know that whosoever wins the Big Boss trophy, or don't even talk about winning the show, if you're the contestant of the show, you definitely are going to have a very different life once you're out of the show. You're going to come, people are going to come up to you with a lot of projects, and fans, especially we outside of the Big Boss house, will be anticipating like where we are going to see Bebika next. So we know that you have done music, you're doing this reality television. What's next in the pipeline? How you gonna, take this trajectory further? Well, I am trying to grow in music. I'll be opening up my own YouTube channel where I'll have my music videos. 2 of my songs are ready. They're on the verge of shooting. फिर I had been writing my own stories. And my motion poster of the movie is in process. वो release होने वाला है motion poster, and sooner the movie will fall in place next year. So मेरा ऐसा है ना कि I love to wait for opportunities, but for how long you will wait? तो वो time frame है ना waiting का, उसमें मैं अपनी opportunities भी create करना शुरू कर देती हूँ. So that is what it is. So you guys will see me into a movie, 2 more music videos coming, and of course reality Rani is coming, and hopefully something bigger happens. I mean, the list is endless. होप और इच्छाओं की लिस्ट तो बहुत लंबी होती है. Right. So tell us, like, this reality Ranis of the Jungle, where can we see it and when is it going to premiere? Yes, it's coming on 23rd September on Discovery Channel India and also Discovery Plus OTT. So it's going to be at 10 p.m. in the night.
ऑन 23rd इज द प्रेस लॉन्च और उसी रात शो भी आने वाला है। तो आप सब दिल थाम के बैठिए और प्यार दीजिए, आपका सपोर्ट दीजिए और स्पेशली हम जैसों को ज्यादा सपोर्ट दीजिए जिनके लिए वो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग था। यू नो व्हेन यू लुक एट द अदर वुमेन, उनको देख के आप बोलोगे ये कर लेगी, इसका शरीर है वैसा ही कर लेगी, लेकिन मुझे देख के आप नहीं बोल पाओगे कि ये कर लेगी, लेकिन फिर भी मैं कुछ चीजें कर रही हूँ, बहुत अच्छे से कर रही हूँ। तो आप सबका प्यार और सपोर्ट चाहिए बस। All right. So, Bebika, before I end this conversation, tell us if you had the chance to go back in time and give your past self one piece of advice before entering the Big Boss house, what would it be? वेल आई वुड हैव एडवाइस माई सेल्फ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और अच्छा पीआर बना के जाओ, क्योंकि मेरी पीआर टीम सबसे घटिया थी। दे वर नॉट वर्किंग इन माई फेवर। आई विश आई कुड नेम देम, बट anyways they were not working in my favor. A lot of other contestants were doing negative PR against me. तो मुझे इस चीज का नॉलेज ही नहीं था। यू नो मैं सोशल मीडिया की बंदी नहीं थी, मैं एक प्रोफेशनल एक्टर थी, तो मुझे समझ ही नहीं आता है कि सोशल मीडिया पे चलता क्या है।